yeah, till recruitment. We'll be talking about initial interviews, final interviews, and in between what kind of assessments we can involve during the selection technique process, right? This we have done. So these are the selection techniques, which is largely used in organizations where we want to assess different kind of abilities in people. You know, like we were talking about competencies and different skills. So each job requires a very different kind of skill to perform for various functions. So sometimes in HR you might need more problem solving skills, more analytical skills, maybe more counseling and mediation skills as well. While in sales and finance, you may not require all those skills. There, your other skills might be required a little bit more. So to assess these different kind of abilities, skills, and competencies, we have created lot many HRs around the world, a lot many psychologists around the world have created psychometric tests. Also, we call them or assessment tests. So these are few techniques that we generally use during the time of interviews so that you can really find out again accuracy of these abilities or these tests or assessments is not 100% accurate, but somewhere they are 70% to 90% accurate depending upon the personality traits and abilities of individuals. What happens sometimes is, for example, you are in a very good mood, right? You are feeling really happy about something while you are taking this assessment, so the result is going to be totally different. While you are in a very sad mood, or you're not feeling good, you are stressed, or you have anxiety about something, and the way you will answer these questions that will be a part of this assessment, then for sure the results is going to be a little different, right? So depending upon our ability and the way we write the answers of these questions, the assessment differs. But still, because even if we are feeling stressed or we are feeling happy, these are just emotions. So these things really do not bring a lot of difference on our skills and abilities. Hence the difference is not really much. That is why the accuracy is between 70% to 90%, right? So now let's talk about the first one. So first one is to assess cognitive ability. So how do you think an interviewer, suppose you are an interviewer, you have to take an interview. How do you going to take or assess the cognitive ability of somebody? Let's first understand what's cognitive ability. What do you feel about what is cognitive? Have you ever heard about this word cognitive? Ma'am, it can be associated with the mental condition. No idea. Am I Correct. audible? So cognition, cognitive means terms. If we are talking about it, it is basically the yes, yes, you're audible. So it's correct. Cognitive means mental ability, the ability to find out how your mental ability scores really good for a job or a skill that is required to be done. So how do you assess mental ability or cognitive ability of a person? How can we do that? Ma'am, usually we put a person into the situation and condition, and then we focus, or we like we can say that we find the answer what they are giving to us. Like if we are putting someone in this situation and then watching that how they are going to behave for that certain situation or condition, so from that we can say that what is the mental ability or condition of the person. Right. Okay. Have you ever given any entrance exams? Yes. PUET, JEE both are Yes. there. So in entrance exam,
Yeah, so entrance exam में there is a separate column of mental ability, right? In every exam that you give, Yes. logical reasoning, English, mathematics, and mental ability are part of mental ability. Check that your presence of mind in answering or solving a problem or a question is how good. Even mathematics, if you think from that perspective, is a mental ability. To check, how active your brain is at the time of taking that test, how active your brain in solving some problems, how quick and how good you are in understanding the problem. So that is how we do different. There are different kind of psychometric tests available in market, which are readily available, which means they are ready made. There are set of questionnaires from 16 questions to 91 questions. Different set of questions, different set of assessment tests have different kind of questions to check depending upon which level of interviews you are taking. So suppose you are taking it for very junior level, executive level, operational level interviews, then you have to check a different kind of mental ability of a person. If you are hiring a CXO level, which is CEO or CMO, somebody like that, then you will have to have a different kind of mental ability. You also need to check their team management and other things as part of the cognitive ability. Right? Cognitive ability can differ from jobs to jobs, roles to role, as well as people to people. Different people have different personalities, so you can design. A lot of companies believe in designing their own assessment tests as well for this, so that they can really choose and select people as per their own culture, the organization culture, their own needs and requirements. Then other है second part also. It's not necessary that cognitive ability can be assessed only through the test. It can also be assessed through the interviews. Right? You create a questionnaire or you ask question and answers to persons. What generally interviewer should do in this case is that they should have the right set of questions readily available, and the answers to each question also should be readily available with them, so that you can easily evaluate कि suppose मैंने अगर शिवांग का इंटरव्यू लिया है, तो शिवांग ने ये 4 क्वेश्चंस हमने पूछे, उसके आंसर उसने ये दिए हैं। मेरे पास जो आंसर्स लिखे हुए हैं, क्या शिवांग के आंसर्स उनसे कहीं पर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिकॉज आई हैव द बेस्ट आंसर्स अवेलेबल विद मी, राइट? सो उसके बेसिस होते हैं किसी भी जॉब के लिए, स्पेशली फॉर एन एचआर रोल, राइट? दिस पर्टिकुलर रोल, चाहे आप स्क्रीनिंग का इंटरव्यू ले रहे हो या फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज ले रहे हो, तो इट बिकम्स वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो उस टाइम आस्क व्हाट काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर रिक्रूटिंग, उसके साथ साथ आंसर्स भी अगर आप साथ में लिख लोगे, इट बिकम्स वेरी इजी टू वैल्यूएट एंड असेस व्हाट वी आर डूइंग। सेकंड आता है इवैल्यूएट लर्निंग एजिलिटी. Now, learning agility is something where you talk about how quick somebody is good in learning new things. So, on a scale of 1 to 5, you need to evaluate whether a person can really be able to learn. If today, suppose we hire a fresher, suppose we hire Anjali and Sakshi. Now, Anjali and Sakshi, we know they do not have any experience and exposure in the corporate world to work. But we want to check whether we hire them and they will be able to learn quickly the nuances of doing a job. Because एक होता है theoretical skills, तो थोड़ा खाद कम theory कर तो दिया आपने मेरी पढ़ मम्मी ली मारती कॉलेज के अंदर. वहीं पे लगाता है Sakshi, you have to keep yourself on mute. Thank you. So this is what happens when we are a fresher. हमारे पास theoretical knowledge तो बहुत होता है, theoretical knowledge बहुत होता है, but when we have to apply in the corporate world, it becomes little different and difficult. Because कोई हमें ये नहीं सिखाता कि कौन से सेट के लोगों से आप मिलने जा रहे हो. Every organization will have a different set of people you will be dealing with, right? Different kind of job roles. Industry to industry, job roles इतने change हो जाते हैं that you don't have those knowledge of products and services. Right? So that's where we check whether the person has a learning agility to really be able to adapt to the newness of the job or not. उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं. देन आता है थर्ड, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट. नाउ सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट जनरली यूज होता है
मिडिल लेवल और सीनियर लेवल एप्लीकेशंस के लिए। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट. So we give them different situations, and on that basis, the kind of answers they give, we decide or we assess that what kind of skills this person will have for the position in the organization. कहने में बहुत आसान लग रहा है, बट एसजीटी को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. यूजुअली पीपल फेल दीज एग्जाम्स प्योरली बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहते हैं. दे ट्राई, व्हाट पीपल डू इज they try to become something else, and hence they do not become very authentic of what they feel as a human being. So for example, अभी अगर हम कोई टेस्ट देते हैं आप तीनों को, राइट, आप तीनों को पता है कि हमें ये टेस्ट ले रहे हैं, मैम ने शायद ये टेस्ट लेना है, तो मैं अपना बेस्ट दूँ. अब वो बेस्ट कैसा होगा? मे बी यू कैन चीट कि गूगल से मैं बेस्ट आंसर्स निकाल के वो सेलेक्ट कर लूँ, but that's not you who is answering this question, that's somebody else who has answered those questions. So आपका जो सेगमेंट है जिसमें आपकी एजिलिटी, आपकी एबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती. उससे क्या नुकसान होगा? आज तो आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, बट टुमारो व्हेन यू आर ऑन द जॉब यू विल लूज आउट, राइट. यू वोंट बी एबल टू शोकेस दोज स्किल्स बिकॉज वो कभी थी नहीं हमारे पास. हमने तो किसी का कॉपी पेस्ट करके रख लिया, किसी से इन्फ्लुएंस होकर वो कर लिया. सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट रिक्वायर्स, इसमें आते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस पूरे पहले से बने हुए कंप्लीट. You have to clear those, I mean, you have to answer those questions, and there is no right and wrong answer. सिचुएशन टू सिचुएशन. अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि सपोज आप कोई एक्सीडेंट होते हुए देखो सड़क पर, राइट. अब शिवांग अगर खड़ा है राइट साइड पे, अंजलि खड़ी है लेफ्ट साइड पे, और साक्षी अपने घर की छत से देख रही है एक्सीडेंट. Now three different people watching one single accident. एक ही एक्सीडेंट हुआ है फ्रॉम थ्री डिफरेंट डायरेक्शंस. अब शिवांग को नजर आया कि एक कार ने दूसरी कार को हिट करा, मे बी द ए कार हिट बी कार. अंजलि को नजर आया कि पहले बी कार ने टक्कर मारी थी. साक्षी को दूर से नजर आ रहा है कि दोनों बहुत फोर्स से आ रहे थे, दोनों ने आपस में वो कर दिया. सो एक ही सिचुएशन हुई, एक ही तरीके का सब कुछ हुआ, बट तीन डिफरेंट परसेप्शंस के कारण हमें तीन डिफरेंट स्टोरी सामने है, और तीनों ही करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है. So this is why we call it situational judgment test, that basis on circumstances, situations, and the where we are, the assessment and the test answers can differ from each other. Then आता है आपका measuring employee integrity. Now ये सब चीजें तो ऊपर के आपने जो पढ़ी वो मेजरली हो गई हमारी फंक्शनल स्किल्स के साथ मैच करते हुए. अब फंक्शनल के अलावा भी हमने दूसरी स्किल्स देखनी, whether the person has the competency of integrity, loyalty, honesty, authenticity, sense of ownership. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? So then again, there are a lot of assessment tests which is available, readily available, or you can customize it, get it customized. Usually, selection techniques के test बनाने के लिए हम hire करते हैं somebody who already have this kind of an experience in either creating assessment test or psychometric psychological background से है, who can understand complex problems, and then you design those assessment test. बाकी जूनियर लेवल, मिड लेवल के लिए जो नॉर्मल चीज़ें हमें देखनी होती है, डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं. MBTI, डिस्क पर्सनालिटी टेस्ट, बहुत सारे. आई विल टेक यू थ्रू सम टेस्ट टुमारो so that you can see what kind of test you can actually go. Basically, there is a website which is free of cost. It has all the different kind of tests available. So I'll share the link with you in the group maybe after the class today, and then you can easily go through any of the tests and see what kind of assessment you are getting. उस असेसमेंट के बेसिस पे जो इवैल्यूएशन करना है वो कोई आपको साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है या somebody who is trained into that. तो उसके एक्चुअली एनालिसिस का मीनिंग क्या है? So now the measure employee integrity. So how do you think employee integrity कैसे measure कर सकते हैं? What is integrity? Ma'am, we can measure the integrity by checking the employee is serious towards his work, or is he loyal towards company, or what the role the company has offered to them, and
what are the action they are taking to fulfill the role, etc. So on that basis, we can check the integrity. Like, is he or her is working towards getting money or towards the company benefits or the growth? So according to me, Hmm. Yeah, what do you feel is your integrity? for now, if I consider the integrity is to How take high is your class. integrity? Ma'am, your voice is not audible clearly. Is it better now? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. Ma'am, can you Yeah. please repeat the question? So, what is integrity for you? Huh. Same thing which I asked earlier. What is integrity for you? What do you think? Ma'am, How I high consider you are it in with the integrity? word loyalty, honesty, like this kind of word can define integrity in better way. Honesty towards work, Hmm. loyalty towards work. Right. Like currently, I'm taking the class, so I'll have to be honest. Like you have said, we cannot cheat from Google what you are asking for, or we should be loyal towards our own Hmm. goal, towards learning and getting skills, rather than cheating and copying from the other side. Correct. Yeah. So that's what integrity is all about. So integrity means that you have to be authentic self. What you are, who you are, you have to see. What happens most of the time, you see people are stressed and have very high anxiety. Why do you think this happens? क्यों होता है? क्यों हम Either इतने they have स्ट्रेस्ड हो not जाते हैं? completed they have not completed their homework in a good sense, or they are not Hmm. confident enough to deal with the situation, or they are not having enough skill and they are getting the opportunity. So there can be a various reason. Right. But most of the people who are in 9 to 5 jobs, working in different kind of companies, why are they always stressed and why are they always in anxiety? Not everybody, but most of them. Say 60, Ma'am, 70% of population is like that. one Yeah. reason can be like if, whether they are getting paid enough for their job, like उनकी पेमेंट अच्छी है तो वो Hmm. मोटिवेटेड होंगे, अगर नहीं है तो स्ट्रेस होंगे, या फिर वर्कलोड अगर ज्यादा है तो वो भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी, या फिर उनके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट Correct. कैसा मिल रहा All of है. this can happen. यस. Right. One very major reason, is that basically we are all, everybody who's working in corporates. Do you think everybody is meant to work in corporates like that? 9 to 6 वाले atmosphere नो में, मैम. नो मैम. right? So when everybody has to work in such kind of atmosphere, no matter what company, what industry, just to prove our society that we are able to do something. Right? Imagine just for 60,000 rupees or 1 lakh rupees, we are spending all our lives working from 9 to 6, और 9 to 6 तो होता ही नहीं है. 9 to 6 के लिए आपको घर से 8 बजे निकलना है, 7, 7:30 निकलना है. You have to come back by 8. So 12 hours are going purely, more than 12 hours are going purely for the work. And for what kind of things that you are taking this? Very little money. You're not able to spend time for Ma'am, your voice is whatever not. you're interested, मैम, योर वॉइस इज फ्लक्चुएटिंग. wherever your interest lies, where your passion lies, which things that you really love to do in your life. Right? Slowly हम क्या करते हैं, वो हमारे हाथ से छूटती चली जाती है. Still gone? इट इज बेटर नाउ. How? Because of internet connection. There is no Wi-Fi, fluctuations will happen. So wherever things you don't understand, just let me know. I'll repeat it. Right? So what happens? Integrity means that you're able to showcase. Integrity means that you're able to show what you are.
to the people, kind of emotions you're feeling. So even if you are not feeling good about something, you are able to show it to the people around you. That's what integrity is. If you're late, you don't have to go to the office and tell them I am late because tire puncture ho gaya tha. Tell the genuine reason. I got up late. कल रात भी ज़्यादा पी ली थी. I got up late. इसलिए I came to late. Came late. You can see this screen now. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So how much you heard, I didn't know. So we are talking about that, not just individuals' integrity, it's about company way of accept whether the people can be integrated, have high integrity or not. In strict है, HR इतना strict है, not accepting genuine reasons. So then what will people do? People will start seeing different kind of things. They will not be never or will never be able to showcase who they are. Right? So the ecosystem where we live has to be created in a manner that we will be able to show integrity. Now, how are we going to measure employee integrity? In organization's point of view, we have to decide some parameters for that. For example, your punctuality is a code of conduct for every organization. So I think I'll close my video for some time. That will make network a little better. Let's try this. Can you hear me now? Not clearly, ma'am. No, ma'am, your voice is not. अभी भी नहीं? Yes, ma'am. It is better now. Your signals are completely fine. I don't know what's the problem. Okay, so that's how we measure employee integrity on punctuality, discipline, code of conduct, ethical governance. Ethical governance is majorly हम background check करते हैं कोई financial fraud ना किया हो, कोई police complaint नहीं है, no, all those things. So that's how you can easily measure. Next is test job knowledge. अब job knowledge आप कैसे test करेंगे of somebody? By creating tests related to the job knowledge very easily, right? So for example, if we have to hire somebody in HR, we will create our test like that so that we can check whether the person can do recruitments, can have some knowledge about interview skills, can really do performance management system, various things in HR. Right? Your test can be designed like that. So different but job roles can be created. There can be a lot of different functional tests that can be created for that, just to check whether the person has job knowledge or not. Right? Most of the organizations, especially in IT sector or IT related sector, usually do that. They do not believe in all other tests, mental ability and all that. Majority of the time they test people on their coding में कितने आ जाते हैं, programming में कितने number आते हैं. So all those things be created in house for by the organization, or you can really buy these things from market, easily available. A lot of companies create specialized tests
different job roles के हिसाब से, and then you can buy them and do that. Right? So these are few selection techniques. Test work assignment means what? Any idea? Ma'am, you are not getting your voice properly. तो HR में हूँ, assignment देख Let me try and place my intellect in different direction. Any better? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So yeah, so I'm saying that giving test work assignment. What do you think about it? Some sort of work directed towards certain people, and then their responses can be checked. Like we get college assignment, and how we perform on that basis, we get marks. So in the corporate sector or industry sector, we can provide some project or work towards the employee, and then how they are behaving and how they are performing the work, that basis we can finally conclude or analyze. Yeah, correct. वो सिर्फ अंजलि ही बोल रही है, साक्षी और शिवांग क्या कर रहे हैं? You Yes, guys ma'am. are So just in like, listening mode today. no, no, ma'am. Yeah. So test work assignments is like in YSI also we are given assignments to perform and do so that we can be tested on that assignment, that how much knowledge we have gained and what we have performed. So like in test work assignments, the company gives the candidates the certain assignments to perform so that they can test their skills and abilities on the basis of that assignment. Yeah. So like we give you assignments, right? YSIK assignments. Why do we give theoretical knowledge or maybe a little bit on practical side as well? Then we give you this assignment to check how are you performing. So on the job mein, what happens in the organization is if you are there on the job, just to see before to give you an offer letter or appointment letter, the company wants to see कि culturally हमारे अंदर आकर कंपनी के अंदर आकर आप कितनी आसानी से वो असाइनमेंट कर सकते हो. It can be a one day assignment, it can be writing assignment, it can be somebody is hired for a freelance basis for some time, then put on a project, consultancy basis पे थोड़ा time रख लिया. So for a client we do it very often because it's a very different kind of industry. They do large art festivals in India and abroad. Now what these guys do is we cannot really just on the basis of interview and our selection process, we cannot rely on the abilities of people. So what we do is we hire them for 15 days or a month depending upon the size of the project and see how good they are in their creative side. Graphic कितना अच्छा बना सकते हैं या art कितना अच्छा बना सकते हैं, उनका visualization कितना अच्छा है. So to check every skill we do that, and then on the basis of the job role if they have done, then we hire them full time or we do not hire them full time. So this is your test work assignment. Next आता है organizing an assessment center. Now assessment centers are again very technical things. It cannot be run by any HR if, until unless you are trained in doing assessment centers. So assessment center basically what they do is they check every candidates कि उनका सोशल साइकिल सोशल एबिलिटी कितना है चीज़ें मैनेज करने में, लाइक पीपल मैनेजमेंट एंड हाउ टू वर्क अराउंड विद अदर पीपल, उनकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी अच्छी है और कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है टू परफॉर्म दैट जॉब. Right? Assessment center again for different positions for different thing can be created on the basis of what kind of roles and responsibilities somebody will have to handle.
राइट. इनको असेसमेंट सेंटर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज द सेट ऑफ क्वेश्चनेयर एंड द सिचुएशंस दैट वी पुट इन दिस पर्टिकुलर थिंग कैन डिफर फ्रॉम वन रोल टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज यू आर इन HR, राइट. HR के लिए आपका सोशल सर्कल में किस तरीके से आप लोग बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव, टोटली डिफर्स फ्रॉम द पीपल हु आर इन मार्केटिंग एंड सेल्स. They will also have to meet, they will also have to meet different kind of people. We also have to meet different kind of people. So what is the difference in the social skills that is required? सेल्स वाले भी उतने लोगों से मिलते हैं, हम भी उतने लोगों से मिलते हैं, बट व्हाट इज डिफरेंट? मैम सेल्स वाले उन लोगों से मिलते होंगे जिनको उनका प्रोडक्ट बेचना होगा, एंड वी नीड द पीपल जिनको हम लोग को हायर करना होगा, वो लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं काम करने में. तो इस तरीके से हमारा अलग अलग रहता है. करेक्ट, राइट. सो दिस इज वेरी सिंपलिस्टिक थिंग टू से कि हम लोग, और वंस वी हैव हायर्ड पीपल, हायरिंग के टाइम पे तो चलो हम भी कंपनी बेच रहे हैं, सेल्स वाले भी कंपनी बेच रहे हैं, नो, दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ good things about companies. But once people are here in the organization, HR का major customer कौन बन जाता है? All the employees who are inside the organization. So your social skills that is required to manage internal people can differ from what it is for the external people for sales team. So this is how things needs to be handled and seen. That's why assessment centers can differ from one position to another position, even for these similar skills if we are hiring. Then other structure your interview process. Now, the major mistakes most of the HRs do in hiring is, and that is the reason why you will see इतने सब layoffs होते हैं या इतनी सब problems आती हैं, is purely because the interview processes are not structured. And when I say structured interview process means that it needs to be written down properly. If this question I am asking, what is the kind of skills I am evaluating from this question? So even if I am asking this simple question, that what you want to do after 5 years, what is the relevance of asking this question? Right? You will see, अभी आप इंटरनेट पे टाइप करो गूगल पे कि टॉप 10 क्वेश्चंस आस्क्ड बाय HR, पहले 2-3 में यही वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट विल यू डू इन नेक्स्ट 5 years or 10 years. Right? Now ask any HR कि why are they asking this question, and approximately 70% of them will not be able to tell you why they are asking this question, because it is popular, that's why we are asking this question. But what is the relevance, and who is noting it down? So suppose I ask Anjali this question, that Anjali, what do you want to do after 5 years in this organization? I'm talking about this organization only because she's joining us, right? Totally depending upon her answers, I will take a note of everything, that what's her career growth path is, what is she looking at, what is the relevance of her joining my organization or this organization for which I am taking this interview, whether our company will be able to manage her individual goals that she has for 5 years or not. So all these things you will have to see, and then you do hiring properly. And it is not just about one question. There are different questions we ask from people. And if you don't structure them, there are chances that people will not be hired in a proper manner for the organization. Right? That's why interview is basically both an art and science. Art in the sense that you need to be creative, innovative about what kind of questions you are asking, in science because you can easily evaluate from each question what kind of skills and competencies you are looking for, right? Then other conduct peer interviews. So what are peers? Surroundings we are working with or our Peers are people who are For- working with us in a similar level, right? Yes. So for example, for these classes, you three are peers to each other. No matter Shivang has higher experience, he has been working in other organization, but just for this particular class and role, you guys are peers to each other. So in organization what happens is, अब अगर हमें HR एग्जीक्यूटिव रखना है, 10,000 लोगों की कंपनी है, एक HR एग्जीक्यूटिव तो होगा नहीं, right? There might be 10, there can be chances that there can be 15 HR executives.
So peer interviews क्या होते हैं? Because peer to peer question answers उस बेसिस पे आ सकते हैं कि हमने अगर अंजलि को हायर करना है एचआर एग्जीक्यूटिव रोल पे दोबारा, साक्षी इज ऑलरेडी वर्किंग विद अस इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ आई टेल साक्षी कि वट एवर प्रॉब्लम्स यू फेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, you ask those questions to Anjali so that she would know what kind of problems you're going through, what is the situations that you handle, and your questions should be basis the real time situations and the skills that is required to do your job. इसमें फायदा क्या होता है peer to peer interviews में? That you will get to assess people very easily for a job role. This is the kind of things that already people are doing in the organization. Right? पीयर इंटरव्यूज के अंदर यूजुअली हम सीनियर्स को यूज नहीं करते हैं, सेम लेवल के लोगों को यूज करते हैं, सो दैट यू नो डे टू डे प्रॉब्लम्स जो आती है काम करने के लिए, दोज प्रॉब्लम्स वी कैन रियली एनकाउंटर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंटरव्यूज हैपन. अ वेरी पॉपुलर मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे आईटी के अंदर बहुत यूज होता है, एचआर में सिलेक्शन हायर रिक्रूटमेंट लेवल के टाइम पर हम बहुत यूज करते हैं उसको. और इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही लेवल होगा कि उसने पीयर ने इंटरव्यू ले लिया उसके बाद देन ऑब्वियसली द सीनियर्स विल टेक वन राउंड एंड देन फाइनलाइज एवरीथिंग. देन आता है चेक कैंडिडेट रेफरेंस. इट्स नॉट रियली सिलेक्शन टेक्निक बट इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ चेकिंग वेदर द पर्सन इज रियली सुटेबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. रेफरेंसेस के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चेक कर सकते हैं, लाइक उनका मेडिकल बैकग्राउंड फॉर द फर्स्ट थिंग, राइट, मेडिकली फिट है किसी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या नहीं, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जहाँ बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट निकलता है या गैस वाली चीज़ें निकलती है या ऐसा कुछ सामान बन रहा है जो किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यू नीड टू चेक देयर मेंटल थिंग्स, सॉरी मेडिकल थिंग्स. देन आजकल मेंटल एबिलिटी, नॉट मेंटल एबिलिटी, मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं. whether the person really do not have any background where they have faced any kind of mental health related issues. कहीं डिप्रेशन तो नहीं था या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता, एंग्जाइटी ज़्यादा तो नहीं है, स्पेशली फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज़्यादा होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स का आपको पता है कि आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट के लिए किसी को हायर कर रहे हो, अगर उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है या स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं होती या स्लीपलीनेस नहीं ढंग से सोता नहीं है या मेडिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं है, सो दैट मीन्स इट इज यू कैन नॉट रियली हायर दैट पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. वन, बिकॉज रात के टाइम हॉस्पिटल्स और ये सब क्लिनिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है इन केस समबडी गेट्स इनटू दैट मोड. सेकेंड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं कोई भी, चाहे एंग्जाइटी हो या स्ट्रेस हो, रात के टाइम हम जब काम करते हैं तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं, राइट, बिकॉज यूजुअली वी आर मेंट, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरीके से सेट होती है कि हम रात को जाग नहीं सकते पूरी पूरी रात. So that's where so you need to hire people who are really healthy in terms of both physical and mental health level. Also candidate reference में हम पास्ट का सारा कुछ रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्विस कहाँ किया हुआ है, कहाँ से रहते हैं, पेरेंट्स ठीक ठाक फैमिली से हैं या नहीं है, बैकग्राउंड में सब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लास्ट एम्प्लॉई अगर कहीं रहा है किसी कंपनी में तो वहाँ का सब कुछ ठीक है या नहीं है, information that the person has shared is correct or not, simply to check that. And on that basis, then you take the person inside the organization. Now, usually background checks happens at the end. Once you have selected the person, finalized the person, shortlisted the person for the organization, तो कई बार बहुत tricky हो जाता है. And that is the reason why most organizations keep probation period. So 3 महीने का या 6 महीने का probation period होता है, so that they can check whether the person who's been here in the organization, who's been hired in the organization, उसका हमने सारा background verification कर लिया and then we are taking that person on time. Right? Any questions so far? No, ma'am. मैम No. प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए ही होता है? Also to see whether the person can perform the job roles or not properly.
Okay, फिर ma'am. आप Thank इंटरव्यू के टाइम पर आप कितनी बार मिलते हो, किसी भी सिलेक्शन के टाइम पे आप कितनी बार मिलते हो किसी एम्प्लॉय से? यू विल मीट मे बी वन बाइज फॉर स्क्रीनिंग, जनरली वो भी फ़ोन कॉल्स पे हो जाता है. सेकेंड राउंड के लिए आप मिलते हैं, देन यू टेक अ टेस्ट एंड देन यू डू फाइनलाइजेशन ऑफ द पर्सन. राइट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव 3 to 4 राउंड्स. इससे ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है. राइट, लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं इससे ज़्यादा इंटरव्यू राउंड्स होते हैं तो. सो दैट इज़ द रीज़न वाई प्रोबेशन पीरियड्स आर देयर, टू चेक कि हमने जो भी एबिलिटीज़ या उनकी स्किल्स चेक करी है, वेदर दे कैन रियली परफॉर्म दोज जॉब्स और टास्क और नॉट. दैट्स वाई. सो 3 to 6 months यूजुअली होता है. एंड एज पर गवर्नमेंट आप उसको बढ़ाकर 1 साल तक का कर सकते हो. अगर 1 साल के बाद भी आपको लगता है द एम्प्लॉय इज नॉट रियली परफॉर्मिंग वेल, देन यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू विद दैट पर्सन और वेदर टू लेट दैट पर्सन गो. Now host a job trial day. Very popular again method, and can be utilized for people uh, where you are not 100% sure, even after assessments and interviews, whether this person can be really be able to perform the job or not. So what you can do is, if they give the consent, the candidate has to give a consent. You bring them to a job for a day, just for a day, and then you give them a trial job to them कि आप करके देखो काम, whatever work you are doing. If for hiring, then give them some hiring to do. If for sales, then you give them some task to do the sales. Whatever the competencies and abilities are, then you give them. So job trial day generally is unpaid kind of a thing, where you are just trying each other, but it has to be for consent ways. Because generally बहुत सारे employees क्या करते हैं कि पहले consent देते नहीं है, मान जाते हैं, फिर बाद में दे डिमांड कि हमें निकाल दिया या हमें सेलेक्ट नहीं किया, आपने हमारा एक दिन वेस्ट कर दिया. सो ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा, डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन दैट यू हैविंग. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जिस भी कंपनी में हम ये फॉलो करते हैं, हम एक कंसेंट फॉर्म बना लेते हैं छोटा सा. कंसेंट फॉर्म में लिखा होता है कि वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर अ डे, इट्स अ ट्रायल of looking at whether you like the company or we like you. So both ways. You can also tell after this job trial day that you don't like the company, don't like the culture, whatever, and you can also take a decision. So both the parties are equally happy, and they both have rights to say no to each other. Usually companies के अंदर this is the process that we follow. Right from your initial screening, जो आपने सबसे पहले किया एट द टाइम ऑफ, जैसे ही आपको सीवी पसंद आया, रिज्यूमे पसंद आया किसी का, यू डिड द इनिशियल स्क्रीनिंग. इनिशियल स्क्रीनिंग में आप क्या करेंगे, जैसे हमने सीए के टाइम पे डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया, बैकग्राउंड चेक करा, बातचीत करके देखा कि उनको कितना आता है अपने काम के बारे में. वेरी बेसिक थिंग्स. इंग्लिश अच्छी बोलते हैं या हिंदी अच्छी बोलते हैं या लोकल लैंग्वेजेस अच्छी बोलते हैं, तो चेक. बट अगेन स्ट्रक्चर इंटरव्यू प्रोसेस तब होगा जब हर एक लेवल पर, जैसे इसमें आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इनिशियल स्क्रीनिंग के टाइम पे या एम्प्लॉय टेस्ट के टाइम पे या कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू के टाइम पे, हम क्या चेक कर रहे हैं, किस तरीके का असेसमेंट और इवैल्यूएशन हर एम्प्लॉय कर रहा है, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर. मान लेते हैं 3 लेवल का हम ले रहे हैं इंटरव्यू के ऑर्गेनाइजेशन में. पहला लिया साक्षी ने एट द एंट्री लेवल विच इज इनिशियल स्क्रीनिंग. सेकेंड लेवल पर अंजलि बैठी है टू डू द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बिकॉज शी इज trained into that. Then comprehensive interview के time पे शिवांग है the senior most because he is more popular and he understands all those things. 3 डिफरेंट लेवल पर हो रहा है, बट साक्षी जो चेक कर रही है, एवेल्युएट कर रही है, वो अंजलि तक भी पहुंचेगा और शिवांग तक भी पहुंचेगा. सो इवेल्युएशन रिपोर्ट्स फॉर 3 डिफरेंट राउंड्स should be with each other, and that's when they will be able to decide whether the person is willing. Like you will see, it's complete flow chart. It's called process. Initial screening करी, नहीं पसंद आया हमने, वही तो fail to minimum qualification, fail हो गया, reject applicant, सीधा नीचे चला गया. अगर पास हो गया तो completed application. तो जनरली हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं, इसको हम एम्प्लॉय वेरिफिकेशन फॉर्म भी कहते हैं. कई कंपनीज के अंदर, बेसिकली जस्ट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर्म कहा जाता है. कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. सो दैट एप्लीकेशन, वहाँ पर भी हमें लगा कि उसने अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली नहीं करा हुआ, तो वहाँ पर भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं.
फिर जाता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कैन बी एनीथिंग, कैन बी जॉब रिलेटेड, फंक्शन रिलेटेड, साइकोमेट्रिक रिलेटेड और असेसमेंट, वट एवर. टेस्ट लिया, पास हो गया तो आगे गया, नहीं गया तो अगेन रिजेक्शन. Then comprehensive interview. Comprehensive interview is usually taken by 2 or 3 people, generally एक bench बनाकर, so that the panel can decide. Because एक individual के basis पर assessment और evaluation करना is not really a suitable thing, so hence it is required that at least 2 or 3 people are there. So for example, अगर आप marketing manager hire कर रहे हो, marketing head होगा वहाँ पर साथ में, आप sales manager को, sales head को ज़रूर involve करोगे, HR manager, HR head को, right? 3 different people, different quality. So then you can really see whether the person is really suitable for the job. अब वहाँ पर अगर पास कर लिया तो हम उसको कंडीशनल जॉब ऑफर दे देंगे. कंडीशनल जॉब ऑफर मतलब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बेस पर. और अगर नहीं पास हुआ तो अगेन इट्स अ रिजेक्शन. नो एप्लीकेंट रिजेक्ट एप्लीकेंट. आपके पास अगर ATS है जो ऑटोमेटिक, दैट वुड बी रिक्वायर्ड. अदरवाइज यू हैव टू राइट अ मैनुअल. रिजेक्शन इज नॉट रियली अ गुड वर्ड. Sorry, the internet was unstable, so I registered. So how rejection email has to go? Again, rejection, using the word rejection should not be there. You should always write that you are not shortlisted for the role because of whatever reason. And always specify reasons, whether skills match नहीं हुए, psychologically match नहीं हुआ, cultural wise match नहीं हुआ. Your evaluation should be that thorough that the person should feel good about not getting shortlisted, and they would be able to they would still remain open candidate, so that in future you have a similar kind of a job, you will be able to give them a chance to come back. So it's a very tricky thing again to do, and again depending upon HR person skills you can really handle these things well. फिर आपका आ गया बैकग्राउंड एग्जामिनेशन. इफ रिक्वायर्ड नहीं होता है, यूजुअली इट इज रिक्वायर्ड नाउ डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज सीनियर लोग से लेकर जूनियर लोग, मिडिल लेवल, सब जगह पर देर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स विच इज हैपनिंग. सो एक एक महीने के लिए बेशक अपना टाइम स्पेंड बढ़ा देते हैं लोग. सपोज किसी को एक जॉब छोड़े हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने जॉब नहीं मिली, चौथे महीने में जॉब मिल रही है. सो फॉर 3 months इंस्टेड ऑफ शोइंग की गैप है, व्हाट दे विल शो इज कि वो 3 महीने भी किसी कंपनी में दिखा देंगे, ऐसी कोई फेक कंपनी का नाम मिल जाएगा. और जनरली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में सब पता चल जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड. मीडियम लेवल कंपनीज जनरली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, इसीलिए वहाँ काम चल जाता है. बट ऑल गुड कंपनीज, every good company that you name in the world today, they are getting background verification done. Especially after COVID, it has become really a mandate. Then आपका medical and physical examination. Again, usually most of the companies do not do that, but we feel as an HR it is very important to know what is the medical condition of the people physically as well as mental health ways, right? Because I'm not sure if you heard about last year's incidents of somebody who did suicide in Gurgaon. ऊपर 7वीं मंजिल से कूदकर उसने सुसाइड कर लिया था, purely because of the stress and anxiety. And he had just joined that company 2 months back. तो किसी को उसका mental health पता ही नहीं था. प्रीवियस कंपनी में भी ही यूज्ड टू एक्चुअली टेल एवरीबडी कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मुझे अप्रेजल नहीं दिया या मेरे हिसाब से मनी नहीं दिया. सो इट ऑफन इट डजंट हैपन दैट ऑफ्टन, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप अ चेक ऑन मेंटल हेल्थ, बिकॉज लास्ट 2-3 सालों में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. पीपल गेटिंग सुसाइडल, पीपल गेटिंग डिप्रेशन, bipolar. So it's very important that you keep day-to-day health checkup of all these people.
on your own. राइट, देन आ गया आपका परमानेंट जॉब ऑफर. ये सब आपने क्लियर कर लिया. बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 2-3 महीने में क्लियर हो गया, इतने में उनका प्रोबेशन पीरियड भी ओवर हो गया. देन यू गिव देम अपॉइंटमेंट लेटर टू वर्क इन द कंपनी विच इज़ अ जॉब कंफर्मेशन लेटर ऑल्सो. डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, रूल्स टू रूल, यू कैन रियली चेंज दैट. तो यहाँ पर जहाँ कंडीशनल ऑफर लेटर दे रहे हैं वहाँ हम जनरली देते हैं लेटर ऑफ इंटेंट. लेटर ऑफ इंटेंट मीन्स दैट वी हैव एन इंटेंशन ऑफ हायरिंग यू इन द ऑर्गेनाइजेशन. Usually does not really have too many clauses and conditions. One pager होता है usually. डेजिग्नेशन लिखा होता है, रिपोर्टिंग मैनेजर, कहाँ आप जॉब करोगे, कौन सी लोकेशन पे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं. देन आपका होता है जब आप मेडिकल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाता है तब आप उनको ऑफर लेटर दे सकते हो कंपनी में. और जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है देन यू कैन गिव देम appointment letter, your job confirmation letter, that your job is now permanent, you can stay in the organization for as long as you want or things goes right. Right, so that's the selection process of every organization, more or less similar. अब कई कंपनीज में होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट 2-3 लेवल पर अलग अलग होते हैं. जैसे याहू इज़ वन कंपनी, तो याहू में मेंटल एबिलिटी टेस्ट अलग लेते हैं, एंड देन दे टेक कल्चरल टेस्ट ऑल्सो टू सी वेदर यू आर कल्चरली फिट और नॉट. बहुत सारे सीनियर लोग वहाँ लोग जो इंटरव्यू देते हैं, वेरी टू मेनी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड प्योरली ऑन फंक्शनल बेसिस. फंक्शनली अच्छा काम कर रहे हैं सब कुछ, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो गया, बट कल्चरली उनको रिजेक्शन मिल जाता है प्योरली बिकॉज वो कल्चरली फिट नहीं बैठ रहे होते हैं कंपनी में. एंड वंस यू आर कल्चरली fail the cultural test, then there is a policy in Yahoo that you cannot reapply for the job for next 1 year or 6 months, something like that. Right? So most senior, larger organizations, big conglomerates have these kind of rules and regulation. Or cultural test, so it's becoming very popular again for everyone. Ma'am, can you elaborate the cultural test process? Like what comes in the cultural test? So again, depending upon organization to organization, हर एक का culture अलग होता है, right? So for example, now Google really hire people not by external interviews process. उनका 90% hiring होता है referrals पे. Right? So one person has friends, family members and all that, so they hire them purely because they want to see whether the person can culturally fit into the system. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड काम है वहाँ पर गूगल के अंदर. प्लस दे डू नॉट रियली फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑन ड्रेस कोड एंड ऑल दैट. सो दे हैव अ गेम जोन. अगर आप लंबे समय तक काम कर रहे हो तो गेम जोन में भी जाके बैठ जाओ, कॉफ़ी पी लो. देयर इज अ स्लीपिंग जोन ऑल्सो. सो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव क्रिएटेड इन हाउस इन द कंपनी. सो कल्चरली दे टेस्ट कि आपकी फैमिली से आप कितना अटैच्ड हो, कितना आपको उनको टाइम देना है, कैन यू रियली वर्क विदाउट वर्क लाइफ बैलेंस और नॉट. वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब हो गया कि वीकडेज में आप वर्क ही कर रहे हो और सिर्फ वीकेंड्स पे आप बैलेंस कर रहे हो अपना फैमिली. सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम Yes, दीज got it. ऑर्गेनाइजेशन सी दैट. अगेन अब अलग अलग कंपनीज के ऊपर होता है. अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो देखती हैं कि लर्निंग एबिलिटी है या नहीं है. दे वांट टू कीप ग्रोइंग, स्पेशली स्टार्टअप्स होते हैं जैसे. सो स्टार्टअप्स चेक कल्चरली whether the person can really perform multitasking or not. So if I am hiring Anjali as an HR manager, can Anjali do facility management also? Can she take care of the administration? कि अगर पानी के ग्लासेस नहीं है तो वो ऑर्डर कर दे फ़ोन करके, या कॉफ़ी ख़त्म हो गया तो कॉफ़ी पाउडर ऑर्डर कर दे. तो दीज डू नॉट रियली रिक्वायर टू मच ऑफ अ टास्क. छोटे छोटे से काम है, बट यूजुअली पीपल से कि मैंने MBA किया है HR में या मैंने ये किया है HR में, वाई शुड आई डू दीज जॉब्स. तो स्टार्टअप्स में दिस इज़ द कल्चर बिकॉज हर एक को मल्टीपल रोल्स करने पड़ते हैं बिकॉज यू कैन नॉट हायर टू मेनी पीपल फॉर स्मॉलर जॉब्स. हेंस दे रिक्वायर पीपल टू बी मल्टी फंक्शनल. सो उनका कल्चर डिफरेंट होगा. MSME का अलग होगा. MSME में बहुत सारी लाला कंपनीज जिनको हम कहते हैं, लाला कंपनीज लाइक दीज आर रन बाय पीपल हु नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड. शायद डिग्रीज भी नहीं होंगी उनके पास, बट दे आर चर्निंग मनी. They know how to sell products and services. They know how to manufacture different things. तो उनका कल्चर इज टोटली डिफरेंट. वो आपको जो कॉर्पोरेट कल्चर की हम बात करते हैं वो नहीं मिलेगा वहाँ. गाली भी चलती है वहाँ पर, बदतमीजी से भी बॉस बोलेगा, आपको सब सुनना पड़ता है. सो दे विल देन चेक यू
कि आप कल्चरली इंक्लाइंड हो ये सब चीज़ें सहन करने के लिए या नहीं। बिकॉज जॉब है, अब कितना बुरा मान के आप बैठोगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए या बड़ी चीज़ों के लिए, किस तरीके से आप इनको मैनेज कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब्यूज़ सुनने का अच्छी चीज़ है, तो हाउ यू कैन मैनेज दैट, दोस्त। बड़ी कंपनीज के अंदर अगेन लर्निंग एबिलिटी देखते हैं, लर्निंग कल्चर देखते हैं, सुटेबिलिटी देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल थीम्स के हैं। Let's take a break. 7 बज गए. Let's take 5 minutes, 10 minutes break, and then we go ahead and do the Okay. interviews. What kind of Okay, ma'am. interviews are there? Okay. Let's connect again.
Shall we start? You guys are here? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Great. So let's do interviews now. Right? Like you can see, sorry, you can see the screen, this particular one, Yes, yes. right? Forms of interview. So usually there are two different kind of interviews. We call it standardized, non-standardized. Standardized is basically 100% interview administered questions, where interviewers are deciding everything in advance, what kind of questions they have to ask. नॉन स्टैंडर्डाइज में दो तरीके के होते हैं वन इज वन टू वन काइंड ऑफ इंटरव्यूज वेयर वन पर्सन इज इंटरव्यू एंड द अदर पर्सन इज आंसरिंग द क्वेश्चन एंड देन वन टू मैनी जनरली इज यूज्ड while you are going for campus placements or you have to do bulk hiring आपने वॉक इन इंटरव्यूज रख लिए या आपको एक ही लेवल पर बहुत सारे लोगों को रखना है एक साथ जैसे एमआरस रखते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या एग्जीक्यूटिव्स बहुत ज़्यादा रखते हैं कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स में ऑफिसर्स रखते हैं सो उन सबके साथ क्या किया जाता है कि एक ही कंपनी में आपने बैठ कर उनको प्रेजेंटेशन दिखा दिया दिस इज़ व्हाट द जॉब रोल दिस इज़ व्हाट कंपनीज वर्क दिस इज विजन मिशन ऑफ द कंपनी एंड दीज आर the things that you are required to do in the organization. Then उसके basis पे openly questions पूछ लिए या questionnaire दे दिए hand written लिखने के लिए जवाब लिखने के लिए. So this becomes one to many interviews, also called group interviews. Campus placements में अगर आप लोग करोगे companies के लिए तो बहुत useful रहते हैं because you are hiring multiple people. Suppose आपकी यूनिवर्सिटीज में अगर कोई आता है कैंपस के लिए so what they do is first they give you the presentation of the company so that they can sell the companies to you. Then they share the job description and role and ask you whether you are interested in it or not. Depending upon the number of application, then one to group interview happens. But they will give you a questionnaire with a set of questions to check your functional ability and job knowledge, and then they hire you on that basis. The one-to-one interviews अब अलग-अलग तरीके के होने लग गए हैं. Face-to-face interview is very common. It used to happen. You're meeting physically the person. You are asking questions, knowing body language भी देख सकते हैं आप उसमें. You can show them the office that you are in, the kind of company you are, all that. टेलीफोन इंटरव्यूज बहुत काफ़ी सालों से चलता आ रहा है स्पेशली फर्स्ट राउंड जो स्क्रीनिंग राउंड होता है उसके लिए हम बहुत पॉपुलर यूज़ करते हैं फिर यू आर जस्ट चेकिंग कि जो सीवी में लिखा है वेदर दिस पर्सन नोज और नॉट चेक हो जाती है बैकग्राउंड चेक हो जाता है थोड़ा बहुत फैमिली के बारे में पता चल जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं ऑल दीज थिंग्स देन थर्ड विच इज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग using Zoom, Meet, all these different kind of video conferencing tools for taking interviews. It became very very popular during the time of COVID and post COVID. उससे पहले भी होता था बहुत ज़्यादा कंपनीज के अंदर डिपेंडिंग अपॉन कंपनी का रिमोट लोकेशन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस दिल्ली में है और उनको हायर करना है से हैदराबाद गुजरात डिफरेंट प्लेसेस तो देन ऑल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर Then आता है some important tips on interview skills. What kind of interview skills is required for interviewing a candidate, not for the person who is being interviewed. तो अभी तक आप लोग पढ़ते होंगे कि इंटरव्यू कैसे देना है, but इंटरव्यू कैसे लेना है that is also very important. So, and as an HR, it's a very very important tool or a technique to understand. So these are few points for that. So one is prepare well. You need to know everything about your company and product. Because until unless you are not aware, you won't be able to sell it out to the candidates. Even if you're asking some technical questions, product related questions, functional job related questions, those questions need to be really sorted in your mind और किसी के थ्रू आपने उसको सिलेक्शन कराया हुआ है तब यू कैन रियली आस्क दोस क्वेश्चन सो फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय से पूछा कि पाइथन आपको आता है या नहीं आपने जनरली पूछ लिया अब उसने बोला मुझे आता है पर मुझे पाइथन का लेटेस्ट वर्जन नहीं आता पुराना आता है अब एज एन इंटरव्यूअर आपको पता ही नहीं है कि पाइथन के कितने वर्जन है राइट सो यू गेट स्टक
कि लेटेस्ट में क्या है और पुराने में क्या है. सो यू नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस दैट अगर वो ये जवाब देता है कि उसको लेटेस्ट वर्जन नहीं आता, पुराना वर्जन आता है, तो कितने तरीके के वर्जन्स होते हैं एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, राइट? So similarly, for different job roles, you need to be prepared really well in advance what kind of questions you are going to ask. Then be methodical. Don't leave interview process open. Completely इस बेसिस पर नहीं कि जैसा चल रहा है इसको चलने देते हैं, जितने questions आएंगे दिमाग में वो पूछ लेते हैं. It cannot run like that. It has to be methodical. You need to understand कि कहाँ पर कितनी बात करनी है, कहाँ रुकना है, कितने पॉज करने हैं, कितना टाइम उनको सुनने में लगाना है. हमें एज एन इंटरव्यूअर बहुत बार लगता है कि हम ज़्यादा बोले और इंटरव्यू ही कम बोले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. यू नीड टू हैव प्रॉपर लिसनिंग स्किल्स सो दैट यू कैन हियर मोर and you can just give them circumstances and situations and questions to answer. Until unless in the last stages of your interview process, when you ask the question, I mean, you ask candidate कि आपको कोई question पूछना है या नहीं for the company, then they will ask the questions about company and you will have to speak. So keep it very methodical and try and bring humor in the interview. Because otherwise क्या होता है, anybody who is coming for the first time to meet you, चाहे कितना भी experienced हो, nervousness होती है, culturally नहीं पता होता कैसी है organization, they don't know what kind of person you are, very serious or not so serious. लोगों को लगता है इंटरव्यू में सीरियस रहने से ज़्यादा अच्छा इवेल्युएशन आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. Bring humor wherever you can, but humor has to be subtle. It should not be very cheap remarks, personal things or something like that. It has to be very subtle kind of a humor, which you also can enjoy and the other person you know will enjoy. Then show you care. अब how will you show you care in the interview? Suppose मैं आती हूँ आपके पास interview देने के लिए, so how will you show that you care? We can ask for water or sit comfortably or anything else the candidate Yeah. is requiring or not. Just confirm that they are Absolutely. Right? So you can start with just a the basic que- thing that, and the have a seat. yes, Is the AC is completely fine as per the requirement. ज़्यादा high तो नहीं है, low तो नहीं है, just a temperature thing. Because धूप में से आ रहे हो तो कुछ लोग इंटरव्यू दे दें, और मे भी सर्दी में आ रहे हैं, तो you need to understand those things. Offer them a cup of coffee, tea, whatever is available in the office. Ask them if they are feeling nervous or not. If they are feeling nervous, you start with a normal conversation about the family, background, how many siblings people have. So just the basic things about, so that people, when you talk to somebody about family related things, the things they really do not feel nervous talking about, then it gives you a ice breaker. जो भी टेंशन होता है या आइस होता है, the kind of nervousness or consciousness we feel while giving interview, it generally breaks down. Right? Or maybe start with giving your introduction. That I'm HR manager, I'm working in this organization, itne time se, whatever you know about yourself. So start talking about those things. So that will immediately breaks the nervousness and anxiety. Then आता है improve your judgment. Now improve your judgment के अंदर आते हैं बहुत सारे unconscious biases. Right? When I say unconscious biases, what do you think? What I'm talking about? What are the kind of unconscious ma'am, biases? we can ask counter question. No, I'm talking about unconscious bias. क्या होता है unconscious bias? Like biasness on the basis of their look or culture. No, Shivang, no idea? ये वाला अच्छा था कि वो वाला अच्छा था, अब ये एक बहुत बड़ा अनकॉन्शियस बायस होता है इंटरव्यू के टाइम पे कि ये मेरे शहर का है, इसको रख लेते हैं.
मे भी मेरे मतलब कास्ट का है या हाँ, मेरे विलेज से है, मेरे वहाँ गांव से। से है, मेरे गांव से है, सो लेट्स हायर। अब स्किल्स छूट गई पीछे, कम्युनिकेशन छूट गया, प्रेजेंटेशन छूट गई, तो वो ये सब चीजें मेरिट। प्रैक्टिकल में होती हैं क्या? एब्सोल्युटली। और ये अनकॉन्शियस बायस है, हमें पता ही नहीं चलता हम कब कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाई वी डू दिस, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि अनकॉन्शियस बायस है। देयर आर 23 टाइप्स ऑफ अनकॉन्शियस बायस। We will talk about them tomorrow, the complete list. So now this 23 unconscious bias में majorly जो यूज होते हैं वो होते हैं stereotypes. Stereotypes like यही चीज़ कि पुलिस वाला है तो धोखेबाज होगा, पैसे खाएगा, बहुत कॉमन अनकॉन्शियस बायस है जो हम सबके दिमाग में होता है। बट नॉट, इट्स नॉट रियली ट्रू कि सभी पुलिस वाले ही पैसे खाते हैं या दे आर करप्ट और दे डोंट रियली डू देयर जॉब्स प्रॉपर्ली। सिमिलरली, अब आप कल्चरली किसी रीजनली किसी उसके बारे में बात कर लो, तो बहुत लोगों के दिमाग में बायस है कि बिहार में है तो बिहारी ऐसे ही होंगे, यूपी के भैये ऐसे ही होंगे, सो वो ना स्लैंग्स के नाम भी दे रखे हैं। तमिलनाडु के हैं तो वो लोग श्रूड होंगे, तो दीज थिंग्स गोज विद अस, एंड अगेन इट बिकम्स अनकॉन्शियस बायस व्हाइल यू आर टेकिंग इंटरव्यूज एंड यू आर सेलेक्टिंग समबडी प्योरली बिकॉज आपने इतना सुना है इसके बारे में, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इसने एक स्पेस ले लिया है। एंड देन यू आर टेकिंग इंटरव्यू, वो स्किल्स को तो दिख ही रहा है कि अच्छी है, बट स्किल्स के साथ साथ दिमाग में बैकग्राउंड में से आवाज़ आती रहती है, पीछे से जैसे आवाज़ आती रहती है ना कभी कभी, कि नहीं यार ये धोखा दे जाएगा, ये श्रूड है, ये बिहारी है, whatever, जो भी हमने सुना। So that really hampers the interview process. So it's very important for every interviewer, जिसका भी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ HR में, if your sales manager involved in interview process, marketing manager, CEOs, you as an HR has to ensure that everybody goes through this training of improving their judgment, not falling into unconscious bias. एंड इमेजिन कल जब हम तेज अनकॉन्शियस बायस की बात करेंगे, यू विल सी कि हम लोग कितनी फ्रिक्वेंटली ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। फिर आता है नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सो नाउ इट्स वेरी ह्यूमन टू मेक मिस्टेक्स। ज़रूरी नहीं है कि आप HR मैनेजर हो, सो योर टेक्निक्स एंड स्किल्स आर सो गुड दैट यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। एवरी इंटरव्यू जस्ट इंश्योर यू नोट डाउन एवरी पॉइंट, so that you know कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई और what I can improve next time, how I can make my interview process better, right? To be very honest, I do it even now after 21 years of work experience. I still note down every interview and I still improve, और हमेशा पता चल जाता है बोलने के बाद या करने के बाद कि गलती हो गई है इस वाले इंटरव्यू में, right? So once you become so conscious about these things, you will notice that what you can do better next time, and it always improves. मैम ये कभी कभी इसमें हमारे बाद में अगेंस्ट भी आते तो हैं, वर्क और कर टू गुड जाती है ना। इंटरव्यूअर, लेट्स डू पिक। कौन सी चीज? लाइक हमने कोई भी डिसीजन लेना होता है और हम अगर क्विकली किसी सर्टेन सिचुएशन कंडीशन के बेस पर ले लेते हैं और फिर बैक ऑफ माइंड सोचते रहते हैं कि वो सही है नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसको कम करती है। हाँ, सो इनिशियली करेगा ना, बट देन यू कीप इम्प्रूविंग एवरी टाइम। ओके, ऐसा तो नहीं होगा हमें ना कि उससे हर डिसीजन आप लाइक, गलत ले रहे हो। यस मैम, There अगर हमें can be लग रहा few है तो हमें नेक्स्ट decisions, टाइम उसको, हाँ। right? So it's always better that once you're taking interview over होते ही आप कभी भी evaluation या assessment नहीं दो। Take time, think over it, go through the process once again. तभी notes लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। Once you go through the notes once again, you realize your mistake. That's for you to grow better. Because competition किसी और के साथ थोड़ी ना हो रहा है. It's all always with you. That you have to improve over यस a period of time. And nobody is checking that. Trust me. इतना ज़्यादा seriously interview process को कंपनी में लेते ही नहीं है. बहुत कम कंपनीज हैं जो इस बात पे काम करती हैं. People don't even notice कि आपने कुछ गलत पूछा कि आपने गलत evaluate किया. It's only you who will get to know about it most of the time. So yes, it might impact decision making, maybe in one or two cases, but then overall it will help you in your improvement, so that you can easily become very good with your analysis and your improvement.
So like I proudly say, कि मैंने दोनों इतने ज़्यादा गलत हायर किए थे किसी कंपनी के लिए, अलग-अलग दो कंपनीज के लिए, I still regret hiring them. And this was the biggest mistake I did. और purely on this basis, कि again वो unconscious bias था. One of the person was referred by my brother, my own real brother. So I did not really check too many things. And we were in a hurry of hiring somebody, and we just hired him. And he was a disaster in terms of his working, the way he was working, the way he used to take everything so casually. So everything came down onto me later on. We faced a lot of problem because of this. There was a rift between me and my brother. कि क्यों तुमने ऐसा उसको भेज दिया? So and I openly take it कि हाँ गलती हुई थी तो हुई थी. That's perfectly fine. The next time you don't really do repeat those mistakes, even if it is hired by or referred by somebody close to your family. So let's do quick question answers round, so that you get to practice a little bit on what kind of questions you can be asked during the interview. So I'll ask the question, then tomorrow you will prepare your questions. You will come back prepared and you will ask me questions. And I will tell you how I answer those questions. Stop share. All right. So the first question is, which is very common question that most of the HR ask is, tell me about yourself and your qualification. All three of you will have to answer this question one by one. So let's start with Shivang. Shivang being the most experienced. Then we will rotate. Hello. Yeah. You could hear the question. Sorry, ma'am. So the question is, tell me about yourself and your qualifications. I am Shivang Patel. I am audible. Yes, you are audible. Yes. So I live in Daman. I have done programming in C++. Okay. After 12th, HSC. Okay. And currently I'm working with Panasonic Life Solution India Private Limited. That's all you have about yourself? Okay, we'll move ahead and then we'll come back to you. You can take some time to think. That's okay. Sakshi? Yes, ma'am. So my name is Sakshi Singh and I am from Varanasi. I've completed my 10th and 12th from Varanasi from ICSE board, and I am still pursuing my BCom honors from Vasanta College for Women, which is affiliated with BHU. And currently I'm also pursuing management certificate course under YSI, and I'm doing one internship under YSI, which is of campus ambassador. And I've also completed one mutual fund certificate course under SEBI. So thank you. Okay, good. Yeah. Anjali? Good evening. My name is Anjali. I'm from Bihar and currently I'm living in Varanasi. I'm pursuing my graduation from geography honors subject, and my back experience or educational qualifications are I have completed my education till 12th with a good percentage, and currently I'm pursuing my master's certificate course from YSI, and that's it about.
I'm so sorry, ma'am. I'm getting nervous. I don't know why. That's okay. Nervous तो सभी को होना होता है. When we take lecture, even we get nervous. So that's a part of life. But how you cannot show your nervousness is what you will have to learn in practice. Like, ma'am, I'm whenever sure. I respond spontaneously, I do better. But whenever I try to prepare back of my mind, then I fail in performing good as I thought to perform. इसीलिए हम कह रहे थे Why ना this practice happens करना. to me? See, we become very authentic when we practice things within one. So But I'm मैम sure sir जनरली ने ये जब होता है कि जनरली ये होता है कि लोग प्रिपेयर करते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं. मेरे साथ उल्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो मेंटली ना. Oh, If you prepare in advance, for example, if you practice in front of the mirror, the same question answers that we are doing right now. Trust me, over a period of time, you will see you are more confident. Because आप खुद की body language notice कर रहे हो. You can see yourself in the mirror. You can see your mistakes that you're making. चाहे इंग्लिश में फंबल हो रहे हैं, या नर्वस हो रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज करेक्ट नहीं है, हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, सर हिल रहा है, मुंह हिल रहा है, कुछ भी जो भी हो रहा है हमारे साथ. सो यू विल बी एबल टू सी एंड यू विल बी एबल टू करेक्ट. इसीलिए मिरर व्यूइंग प्रैक्टिस हमेशा हमेशा इज बेनिफिशियल. और इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. अब तो मोबाइल फोन्स आ गए कैमरा वाले, सो इट्स मच मोर इजियर. यू रिकॉर्ड एंड सी हाउ यू परफॉर्म एंड देन ट्राई इट अगेन. That okay. will really help in answering this question. So, same question. Let me try and give you the answer. How generally we assume that a person is going to give answer is start with something that really comprehends about you. So maybe a quote. Because आपका नाम तो already पता है ना interviewer को. Why waste time in telling them about your I'm Sakshi Singh? Everybody knows you're Sakshi or Anjali or Shivang. It's written in the resume. तभी उन्होंने आपको बुलाया है मिलने के लिए. So start with maybe a beautiful quote. चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे इंग्लिश में. Right? That's a very good way of introducing yourself. और उस quote को जो आपके साथ सच में relevant हो. Start with that I believe in something which is written by a famous poet called Robert. He has written that I have miles to go before I sleep, and I truly believe in that. And that is the reason why I'm here for the interview. That I believe my skills, competency, abilities can really help me to take more different kind of challenges, which can keep me alive for a long period, and I can grow in your organization. So that's about yourself. So you're comprehending everything about yourself in telling that what you are doing currently and what you want to do in future. You're talking about your current and what you want to become, how you want to grow and progress in the organization. Right? So it's just one example. And जितना innovative होगे इस चीज को लेकर उतना ही ज़्यादा it will become. Most people think कि standard answer question है ऐसे ही बोलना है. Starting with my name is Anjali, and you become a robot and you start introducing yourself like that. Why do that? Why can't be creative? Why can't you be creative? And why can't you just show them what you are truly? If you like something, if you like poetry, talk about poetry to start with. If you are into shairi, why not to start something with shairi? Anything that you like. So that's the way that you can start with introduction. उससे क्या होगा? मैम एक क्वेश्चन. Yeah. सॉरी मैम. Sure, please. मैम एक हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन होता है कि इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट और एलेबोरेटिव. ये समझ नहीं आता कि ज्यादा टाइम लेके उसको लाइक आपने जैसे बोला कि कोटेशन से शुरू करते हैं, तो अगर हम एक अच्छे मैनर में देना चाहें तो वो श्योरली टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि हम अपने एबिलिटी को बहुत अच्छे से एग्जैजरेट और एलेबोरेट करके सामने वाले को दिखा रहे हैं कि वो इम्प्रेसिव दिखे. बट क्यों बताना है इतना? वो कहीं ना मैंने कहीं हमारे कोई लिए नुकसान भी तो. मैंने इलेबरेट किया. कितना शॉर्ट था मेरा कोट. यू नीड टू नो द ऑथर हु हैज रिटन दैट कोट. यू नीड टू नो कि उसका मीनिंग क्या है और आप उसको कैसे यूज कर रहे हो अपने अपने कंटेक्स्ट में. लाइक मैम यही क्वेश्चन That's है all. कि कोई बोलता है आप कि जब इंट्रोडक्शन देते हो तो 10 लाइंस तो गई उसमें इंट्रोडक्शन में yes जाते मैम. हैं.
तो वही Yes. 10 स्टेटमेंट्स को आप अपना दूसरे तरीके से बोलने के लिए शुरू करें। इतना टाइम तो सभी देते ही इंटरव्यूअर, और जनरली आपको ना सामने वाले के मुंह पे बोर्डम दिख जाता है कि हाँ मुझे चुप हो Yes. जाना चाहिए, द इंटरव्यूअर इज गेटिंग बोर्ड अबाउट लिसनिंग। So you will see easily, इसीलिए फेस टू So फेस it इंटरव्यू या shouldn't be वीडियो long or कॉन्फ्रेंसिंग, short but impressive. हाँ it should be very mediocre, I mean not very short, not very long, it should be good and impressive so that the other person see। इसीलिए हम इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस या समरी पढ़ते हैं ना। एक बुक को 6 लाइनों में लिखना या एक पैराग्राफ में कंप्लीट लिख देना इज an art, and that is the art that we will need to bring in our day to day communication, कि आपकी बात भी पहुंच जाए सामने वाले पे, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, कैन बी एनी लैंग्वेज। राइट नाउ पीपल टेल मी कि आपकी क्लास 2 घंटे 1 घंटे में खत्म हो जाती है, क्यों? लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करके एग्जाम्पल्स देकर खत्म कर देती हूँ। आई डोंट नो हाउ टू इलेबोरेट। अब एक ही पॉइंट को 20 बार अलग अलग तरीके से बोल देने से उसका एलेबोरेशन चेंज नहीं हो जाएगा। राइट, यू नीड टू गिव देम प्रैक्टिकल थिंग्स इन योर क्लासेस कि ये प्रैक्टिकली ऐसे सॉल्व होगा, सिंपल एज दैट। अब उसका कोई और तरीका नहीं है, तो ऐसे ही सॉल्व होना है तो वैसे ही होगा। यू कैन चेंज द वे एज पर योर पर्सनैलिटी, बट उसका सोल्यूशन तो ऐसे ही आना है, वो थोड़ी ना चेंज हो सकता। सो हाउ लेस यू स्पीक हैज नथिंग टू डू विद, और हाउ मोर यू स्पीक विद, नथिंग टू डू विद what you want to convey. And ma'am, one more question. Should we incorporate our personal information or should we avoid it? पर्सनल इंफॉर्मेशन तो पूछते ही है इंटरव्यू में। दे वुड लाइक टू नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स क्या करते Like हैं। you have said that कि CV में already written होती हैं, तो हमें वहाँ पे बोलनी जरूरी है या फिर हमें नहीं, वो skip करनी? अगर जब तक इंटरव्यू नहीं बोल रहा है तब तक जरूरी नहीं है। एनी इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन इन योर रिज्यूमे यू डोंट हैव टू रिपीट except those part which is your experience, that I qualified my MBA, yeah I did my course from YSI. It's a certified course from AICTE. It gives a lot of benefit because I have learned practical things about HR. So because all these things are not written, you've just written ki YSI se course kiya hai. What not written is has to be conveyed. Right? Similarly about your experiences, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिखी है कि मैंने क्या क्या काम किया है, कैसे किया है वो आपको बताना पड़ेगा। कैसे किया है मतलब हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, व्हाट डिड यू अचीव while doing that job. So for example, अब मेरा इंटरव्यू हो रहा है, राइट, आई एम टेलिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस सम इयर्स का। If somebody asks me ki what have you achieved in HR or what was your last roles and responsibilities, so we start talking in percentage. In my last organization, we helped the company save cost on recruitment by 33%. How 33%? Calculations करके दिखा सामने पेपर, because you are thorough, you know it how you did it, so you are showing it in the paper. Then move on to the next function. We did performance appraisal of these many people, and we realized that periodic reviews are much better than annual reviews. ये आपका review के लिए हो गया. Then we did a lot of training and development in the company. Then you need to understand and remember कि कितने लोगों को training दिया आपने, कितने man hours में हम generally count करते हैं learning and development देने के लिए. How many man hours you did for one company? So we did 1700 man hours for 800 employees in a period of 6 months. This has to be your metrics. Simple. उसके बाद वो इस पे सवाल पूछेंगे तो आपको पता ही है क्योंकि आपने किया है, so you will be able to elaborate that. तो जो कर चुके हैं उसको नहीं बता रहे, जो लिखा हुआ है उसको नहीं बता रहे, कैसे किया है उसको अचीव, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। And never shy away from telling your achievements, because if you won't market yourself, who else will? आप किसी के रेफरेंस से तो नहीं आएगा, ना ही किसी और को बात जानते हैं, जो आपने रिज्यूमे में लिखा है उसके बेसिस पर उन्होंने आपको बुला लिया इंटरव्यू। But now you need to market yourself. Everybody should know how to sell themselves for the right job. If you are really passionate and that job really interests you, फिर तो आपको अपने आप को और अच्छे से मार्केट सेल करना पड़ेगा। अपने आप को सेल करना इन द सेंस अपनी सारी पर्सनालिटी, who you are completely out in the open. So this is how you are going to answer the first question.
फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. What makes you unique for this particular role? How are you going to answer? This is the question I'm asking as an interviewer. Now, what makes you unique? में मुझे क्या जानना है आपके बारे में? Why are you different than about? I'm asking this question to Anjali. So, what makes you different from Sakshi and Shivam today? Why should I give you an opportunity to hire you? Similarly, if it is for Sakshi, how unique she is other than Shivam. So, you are going to talk about your personality and how you can achieve things. It's a hint. Now the question is to you. How are you going to answer it? So let's start with Can I Anjali try, this time. ma'am? Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. So I think that I'm unique in the way that I have a good listening capacity, and I also think that I have a multitasking ability, and I can perform the task well in the different and difficult situation. I have also ability to lead the team and teamwork, and I can take initiative in every situation, whether I have complete information or not. Whatever I know about the situation, I can take initiative about that. And I also think that I have some management skill to manage in every situation or every field, whatever I know from my experiences. And I am also willing to learn each and every time. So that's make me unique, in my opinion. And I will be happy to know the review about the other what think about me. Thank you. Okay. Good. Yeah. Alright, Sakshi. Yes, ma'am. So, I have a good interpersonal skills and communication skills. So, I am able to solve my problems and listen to my colleagues and employees which are under me. And I am, I have good leadership quality. So, I can lead people good and I can solve the conflicts. And so, ma'am, I have no idea what to say now. It's okay. That happens because it's the first time you're answering this question. So that's okay. Okay. So Shivang, over to you now. What makes you unique for this job? Mm, First of all, I am very cool and calm. I didn't get anger, so that's I can handle this situation in any situation. I can handle better. That's make me different from other. Very nice. Yeah. Anything else that you want to include? Yes, I am also good in IT, what we call, and I can any app I can access easily. Okay. Hello. Good. Yeah. So good that you guys spoke about your personalities. What more I want to listen about you in you being unique is that how your previous companies or in your colleges, while doing your projects and assignments, what kind of feedbacks you were given on you being unique. So, like for example, if you're a fresher, you can talk about I did this project in my college and I led the entire team. We could complete the project in less than the time that was devoted to us, given to us. And three things we did was this. Simple as that. Similar things you can talk about your internship, any extracurricular activities that you did in the school, colleges. How did you handle those things really well? So people would like to see
how your management skills you applied in whichever area you did. So it doesn't really matter whether you have experience or not. School, college, maybe even if you were a little active in your school or colleges, that's why we say no, that instead of just being kitabi kira, you need to be really, really open about and open your different personality traits, right from very start. So it can be sports, it can be cultural activities, it can be a part of the event, organizing something, some festival in the college, universities, wherever. This participation or leading can really help you in answering this question. That makes you unique. Similarly, if you have experience, then you can talk about the work that you did and how your manager praised you. So I did this particular project, we achieved wonderful results. Our sales target was given to us to achieve 100%. We overachieved it to 135% in 1 year's time. And how could we do it? Because we knew the territory given to us was very small, but we tried and expand the territory. So different things that we have done. Again, it comes with a bit of authenticity because you've already done that project and you know how to do it, and a little bit practice. So that makes you unique from other candidates who are here because आपके experiences or exposure cannot be duplicated by other persons. Simple. Right? So जो project पे या जिस festival पे आपने काम किया होगा अंजलि से जरूरी नहीं है कि साक्षी ने भी उसमें काम किया है. Sakshi will have a different perspective and different kind of work experience or project experience. So this is how we can differentiate ourselves. यस मैम, लाइक अगर हमने टीम वर्क की बात करी तो अगर हमने कोई भी प्रीवियस टास्क परफॉर्म किए हुए हैं जहाँ पे टीम वर्क वाली एबिलिटी दिखे तो वो हमें वहाँ पे डालनी है. Absolutely. Anything that you have done in your college, किसी भी चीज के लिए आपकी praise हुई. Yes. Like that will act as a proof that I'm having this ability and that's making me unique. Correct. Thank you so much. Right? So maybe your teacher used to tell you कि Anjali is really good. She comes on time. She's very high in punctuality and discipline. और कुछ भी नहीं है बात करने के लिए तो why not talk about this? That I'm very organized. My school teacher, my parents used to always say कि मेरा table is always organized. My pencil box is always organized. These are smaller things, but it can easily show that you are really a skillful person, organized, presentable, and you can manage things really well. That's the question. That's the answer to this question. It's not really the ideal answer, but in a way, you can really create your own answer. Now, very interesting questions generally HR asks is why do you want to work for this company? Again, a very common one. What do you think you can answer in this? Can I try? Yeah, please. So I would like to work with this company because I think I'm progressive and I try to learn things very quickly, and I will by that I will contribute in the company growth as well as in my growth also. And if I'm getting more projects which is enhancing my ability, then I'll be a good asset for the company in future, and the company will be having progress. I have a good leadership quality and a multitasking ability. So if I'm not having the work of my caliber and the other work are also available, then I'll be able to do it whenever it is required. So I think I'll be the good choice for your company and you should have. Thank you. Good. Okay. Yes, Shivang, your turn. Hello. We can hear you. Actually, I'm not audible. You're not able to listen? Yes, now I'm. Is it better now? Yes. So the question is that why do you want to join this company? I want to join this company because I have heard about
The company is having good culture. Right. Hello, hello. Yeah, yeah. Carry Ah, on. yeah, yeah. Company is having good culture. It is a big brand name in market. Good opportunity for my career growth. Hmm. What else? Mm, and company is paying good compensation to their employees. So I like Right. to work. Yeah, good. So, see, the crux is that we should research about the company first. We need to go to their website, we need to go to their LinkedIn pages or other pages that they have on social media. We need to Hello. see what kind of information we have available about the company. Right? The more you will read about the company, the more prepared you are to give this answer. Right? You can talk about that your mission states that this is what you want to do in the company, and I think my personal goals and missions matches with your organizational goals. Then you can talk about one or two sentences. कैसे आपके और company के goals match कर रहे हैं. Right? Anything that you feel. और यू कैन टॉक अबाउट कल्चरल अलाइनमेंट कि आपकी कंपनी के वैल्यूज हैं प्रोफेशनलिज्म इंटीग्रिटी एजिलिटी आई हैव ऑल दीज थ्री थिंग्स एंड आई हैव शोन इन डिफरेंट वेज in my entire career or during my college and university time. I have been very agile in terms of being helpful to my colleagues, giving responses in the classrooms. I was very helpful to other people. I used to counsel my friends, different kind of things that you do. Right? So your values match kar diya, mission match kar diya, anything that is there, and then talk about the role also because you know already the job responsibilities. Then how you can really fit into those job responsibilities, right? That's you need Yes, to elaborate. So it will give them indirectly you're passing on the message that I have read about your company very well. I know everything that I can know, and hence I am prepared to join your company. And that is what the interviewer wants to listen to also. They want to see कितना research करके आए हो, क्या क्या चीजें पता है. कई लोग I have seen in my interview कि वो ये भी पता करके आते हैं कि उनका बॉस कौन होने वाला है. जब उनका नाम पता होता है, उनका लिंक्डइन पेज पूरा रट के आए होते हैं, सब कुछ पता होता है, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि इन्होंने एफर्ट डाला कि मैं शायद इनकी टीम में जाऊंगा, चाहे उनकी टीम में भेज भी नहीं रहे हूँ, बट एटलीस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितनी ज़्यादा आप खोजोगे कंपनी के बारे में, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू फाइंड आउट अबाउट द कंपनी. Yes, yes. द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव, वैसे भी मतलब इट विल रियली हेल्प यू टू फाइंड अबाउट द कंपनी मोर इन डिटेल्स. आपको भी अपना जजमेंट लेने में आसानी होगी कि करूँगी भी या नहीं कर पाऊंगी इस कंपनी के अंदर ज्वाइन. तो दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट टू नो. सो अपनी रिसर्च थॉरो करके देन यू कैन गो एंड ज्वाइन. स्पीक टू सम एक्स पीपल, कलीग्स, एम्प्लॉयज, सबके नंबर, सबके लिंक्डइन अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने छोड़ी हो कंपनी. जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट क्यों छोड़ा था. You will get to know the results, reasons. Some people leave for money, that's fine. उनका और आपका गोल अलग हो सकता है. Some people leave because of cultural not being good, environment not being good. So फिर आप क्यों करोगे ऐसी कंपनी ज्वाइन जहाँ का environment अच्छा नहीं है. So similar things you will get to know, right? That's this question. Let's do the last question, and then rest we will do tomorrow. Again, very common question is what are your strengths? And it becomes very tricky. So let's start with Sakshi this time. Sakshi का हमेशा middle में आ रहा है नाम. So my strength is like I have good listening capacity. I have good communication skill and interpersonal skill so that I can communicate with people easily and work on their benefits and betterment. And I have also leadership skills and management skills too, so that I can manage the work properly and work efficiently and effectively in the environment of the company. Good. That's my Yeah. Very nice.
Just one more point you can add in this is that, align your strengths. That suppose you are good in listening, you can always talk about how it has helped you in your job previously, or how it has helped you in your college and university in solving problems. It's a simple. जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसने आपको कैसे बेनिफिट दिया है, and how it can be benefited for the company also. So we just have to link that. All right, Shivang. Anjali, you can start. In the meantime, Shivang comes. Yes, ma'am. Thank you. I think that my strengths are that I am a good task performer, as I have contributed in my school's program, and my teacher always used to believe me that I will perform good. And I also think that I can do the work at my best capability, and the result is that I have been at the first rank from my class 1 to 12 in my school. So I think I have from that I think I have leadership quality too, because I have been the class representative till my class 12. And the other strength I think is that I'm so adapted with the situation, so I can easily adapt with the situation and cultural aspect of the institution or any organization. And apart from these, I think my strengths are that I get involved with the people easily, but at the same time I'm so choosy. So I first find some quality in the people, and then I get attracted towards them. So I think I have the strength of that kind, that I choose people who have some quality in my point of view. So these are my strengths. And I have also some other strengths, like I have a good communication skill, I think, and a good interpersonal skill. I can take initiative, and that's it. I'm not recalling many others because of my nervousness. So I'm so honest with my answer, and I'm so honest with the situation, and that I think that sometimes I act as my strength and sometimes as a weakness. So thank you. It can be both sometimes, for sure. But majority of the time, you need to talk about, see, very specific. You see, sometimes, abhi, I am not counter questioning you on Yes, each ma'am. answer that you guys are giving, because अभी हम teaching वाले mode में हैं. But generally interview के time पे क्या होता है, when you are answering some question, the interviewer can grill you more on these questions. Suppose you said two things as a strength, right? Then I am very creative and I am very good at listening. अब वो कहेंगे creativity में बताइए आपने क्या क्या किया. What all have you done in your life which is creative, right? So now you will have to then explain it, and then again on listening they will say, okay, so how it has benefited you, your listening skills. Because if you are in HR role, you might have to go out and sell your company to other people. So if you keep listening, how will you and when you sell the company? So these kind of counter questions will come. So you will have to be prepared for that. Right? So that's very मैम एक important चीज तो thing. और है, मैं आधी चीजें भूल क्यों जाती हूँ, Because और practice नहीं जैसे है ही ना. मैं बोलना खत्म Practice करती हूँ करोगे. वापस मुझे याद आ जाती है. Write it down. Take a note of it. That's all right. Okay, thank That's perfectly okay. To start with initially, for sometimes you can always do that. Right? But yes, when you are going for the interview, you cannot really look into the paper and then say something. Right? Because वो authentic नहीं लगता है. फिर लोगों को लगता है कि क्यों one लिखने की quality I जरूरत है, would जो like to कर add. चुके हैं. Sorry. Yeah. Carry on. लाइक मैं 3 बार मुझे मौका मिला कि मैं अपनी स्ट्रेंथ बताऊं, यूनिकनेस बताऊं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं. मैंने क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ाया है, एंड मैं सारे सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ा लेती हूँ. तो आई कैन यूज इट एज माई स्ट्रेंथ, यूनिकनेस, दैट आई हैव अ मल्टी डायमेंशनल व्यू विद द सब्जेक्ट और द सिचुएशन, एंड आई कैन यूज दैट. बट मैं हर एक टाइम भूल गई हूँ. मैं जब भी मैं थैंक यू बोल देती हूँ, उसके बाद मुझे 2-4 क्वालिटी और नजर आने लगती है. तो मैं उसको कैसे, ये स्टेबलाइज नहीं रहते मेरे आंसर, मुझे लगता है. So उसको stabilize करना, that is the practice that you need to do. He talk about three things only.
वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर और टीचर स्किल्स के बारे में भी आ रहा है। जैसे हमने बीइंग यूनिक की बात करी, so being unique can talk about different kind of strengths that you have. एक के बाद एक दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में आप बात कर सकते हैं. When the person is asking you what's your strength, so just talk about 3 things. That I'm very good at problem solving because I'm a great listener, because I do things creatively, I look at the out of box solutions. So आपने एक तो बता ही दिया, you are good at solving problems. उसके साथ आपने 3 और बता दी कि मैं बहुत अच्छा सुन भी सकती हूँ, I am good communicator, I can counsel people. So 4 चीज़ें और उसमें आपने गिनवा दी. So your answers has to be strategically designed. And when you write it down first and then practice it, then only you will be able to answer those questions. And we are not saying कि ये सब artificial होगा. Yes. क्यों? क्योंकि आपकी skills है और आपकी strengths है ये. We are just practicing it in terms of comprehending it better, summarizing it better, so that we can convey whatever we are feeling about ourselves in a short period of time. Because सबको पता है कि interviews cannot really go for long. ऐसे ही हम जब सीनियर लेवल के लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं तो हम उनको ऐसे इंटरव्यू कहते हैं. ऐसे इंटरव्यू मतलब कि ऐसे फॉर्म पे होते हैं that you don't really ask them these question answers kind of thing. You talk to them कि हमारे कोई सिचुएशन आई थी कंपनी में, this is a situation we faced 3 years back, आग लग गई थी and suddenly these things happen. So how do you think we can solve this problem going forward? Right? So the person will then be able to answer that question. So वो इंटरव्यूज लंबे चलते हैं because ऐसे टाइप है, सिचुएशनल है, सर्कमस्टेंशियल बेसिस है और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे बेसिस है. अब क्योंकि पास्ट के बारे में आप बात कर रहे हो, सो यू ऑलरेडी हैव द सोल्यूशन कि आपने किसी ना किसी तरीके से या आपकी कंपनी ने उसको सॉल्व किया हुआ है. But how this new person who is at senior level we are hiring can help resolve the same problem in a different manner? Because प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ा है ना, सर ने पढ़ाया होगा, नीरज सर ने. तो क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? यू हैव अ प्रॉब्लम, यू गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, फिर आप उसके ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकालो. एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. सिचुएशनली कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, दैट वी विल हैव टू सी डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग कंपनीज, पीपल, कल्चर. यस मैम. Yes, ma'am. I would like to add one concept like सर हैव थॉट कि हम 4 किसी भी कंडीशन या सिचुएशन को 4 कैटेगरी में कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट. और उसके बेसिस पे हम सिचुएशन को फाइनलाइज करके और एक्ट कर सकते हैं. एंड वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से वर्क करेगी. दोनों चीज़ों में काम आती है, टाइम मैनेजमेंट में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. यस मैम. You can easily use that. So you know, you've learned the professional skills for 2 months. Now you're understanding HR skills. You need to learn how to combine both now and get into the roles of doing HR in a different way. So कल के लिए assignment है, 5 questions तैयार करके आओगे आप. You will ask me these questions. I will tell you how to answer. Right? So कल मुझे grill करेंगे आप. Okay? Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session today. We have learned very I much. know, I'm really sorry about the network, but I was not at home today. Ma'am, network have not bothered us at all. Like this session was quite great, I will say. Thank you so much. So We'll it learn doesn't matter कि new कैसा things नेटवर्क tomorrow था, as बट well. हमने बहुत चीजें सीखी हैं आज. और कल इसको कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑनबोर्डिंग आल्सो. अभी हमने सिलेक्शन कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, नाउ हाउ वी आर ऑनबोर्डिंग पीपल इन द कंपनी. दैट इज अगेन इवन मोर इंटरेस्टिंग. चलिए फिर मिलते हैं कल 6 o'clock. yes, Thank you so much for your time. thank you, ma'am. Bye-bye. Good night, ma'am. Good night. Bye-bye.